Let's look at the rules for drawing the ray diagrams. हमने बस अगर rules समझ लिए तो सारे ray diagrams आप खुद अपने आप बनाओगे without even my help. So let's see. This is first we will see the rules for concave mirrors. फिर concave mirrors के ray diagrams बनाएंगे. Then we'll see the rules for convex mirrors and draw the ray diagrams for convex mirrors. So this is a concave mirror in which this is the non-reflecting surface and this side is the reflecting surface. तो ये हमारा एक concave mirror है. This is the principal axis. First rule states that if any ray of light is falling parallel to the principal axis, you can see that this ray of light is parallel to the principal axis. तो mirror से टकराने के बाद reflect होके it will pass through the focus. This is the first rule, that if a ray of light is coming parallel to the principal axis, after reflection it will pass through the focus. Now the second rule, again we are going to draw the concave mirror. This is the principal axis, this is pole. Second rule states that that's just opposite of the first rule, that if a ray of light is passing through the focus, focus से pass होकर आ रही है, then after reflection from the mirror it will go parallel to the principal axis. After reflection it will be going parallel to the principal axis. That's rule number 2. Rule number 3. I need some more space here. Rule number 3. Again I am drawing a concave mirror. Rule number 3 states that any ray of light passing through the center of curvature will be reflected back in the same direction. मतलब जिस रास्ते आई थी उल्टे पैर उसी रास्ते वापस लौट जाएगी. If a ray of light is coming and passing through the center of curvature, then mirror से टकराने के बाद it will be going in the direction and that will be retracing its path. It will be going in the same direction from which it was coming. This is logical. Why is it retracing its path? Why it's not going in some other direction? You can easily understand this by laws of reflection. हमें पता है angle of incidence is equal to angle of reflection. तो अगर angle of incidence 0 हो जाए तो angle of reflection भी क्या होगा? That will also be 0. Any ray of light that is passing from the center of curvature, अगर किसी भी sphere में center से pass होकर एक line बनाई जाए circle तक या sphere तक, then that line, that is the radius. A radius is always perpendicular to the circle at that particular point. तो इसलिए since it is at the normal only, this ray of light which is passing through the center of curvature, it's actually making an angle of 0 degree. That is, the angle of incidence is 0 because it's coming perpendicular to the mirror. अगर angle of incidence 0 है तो angle of reflection भी 0 होगा, and so the ray of light will be retracing its path and it will not be bending in any other direction. I hope that is clear to you all. Now, fourth and the last rule, that is true for any mirror, not only for concave mirror or convex mirror. This rule number 4, it's true for any mirror, that any ray of light that is falling on a mirror, any ray of light that is falling on a mirror, then the angle of incidence is equal to angle of reflection. And you have seen that in the laws of reflection as well, that it's true for any mirror that angle of incidence is always equal to angle of reflection. And remember one more thing, ये जो principal axis है यही हमारा normal भी होता है, because the ray of light is passing through the center of curvature and the pole. So this principal axis behaves like a normal also. Okay.
तो these are the rules to draw the ray diagrams. Just ये अच्छे से rules memorize कर लीजिए and you will be easily able to draw the ray diagrams. So now let's start to draw the ray diagrams for concave mirrors. Now let's draw the ray diagrams for different positions of objects in front of a concave mirror. Concave mirror के सारे ray diagrams बनाएंगे, but before that, I just want you all to sit with your notebook and draw all the diagrams by yourself. आप खुद बनाते जाओ and pause the video, try it by yourself, then check whether you have drawn it correct or not. ठीक है? So let's start with that. The first condition is when the object is at infinity. ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है. ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, उसको शो कैसे करते हैं हम? तो उसको शो करने के लिए हम पैरेलल बीम ऑफ लाइट शो करते हैं. ओके, वी शो पैरेलल लाइट्स कमिंग टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सो लेट्स ड्रॉ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जस्ट शो इट विथ टू पैरेलल लाइट रेज. दैट्स इट. You need not draw any object in case when the object is at infinity. So just show two parallel lines, two parallel light rays that are coming from infinity. ये mirror से reflect होने के बाद में कहाँ आनी चाहिए? They should be intersecting with each other at the focus. So let's see that. So after reflection, they will be passing through the focus. So the point of intersection of these light rays will be at focus. For every ray diagram, we will be writing what is the position of object, position of image, nature of image and size of image. ये चार चीजें हमें हर ray diagram में लिखनी ही है. Okay? So here, what is the position of the object? The position of the object is at infinity. Where is the image formed? What is the position of image? At focus. What is the nature of image? It's real and inverted. And what is the size of the image? That is point size. Why I am saying that the image formed is real and inverted? क्योंकि light rays जब भी actually एक दूसरे से intersect करती हैं, that is called a real image. And a real image is always formed inverted. Real image हमेशा उल्टी बनती है. And जब भी लाइट रेज एक्चुअली एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं तो इमेज जो बनती है दैट इज ऑलवेज अ रियल इमेज. ओके, नाउ लुकिंग एट द सेकंड कंडीशन. नाउ वी विल बी ब्रिंगिंग आवर ऑब्जेक्ट क्लोजर विथ एवरी स्टेप. हर बार हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पास लाते जाएंगे. सो दिस इज द फोकस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ वी आर प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, अब वही कोई भी दो रूल्स यूज कर सकते हो आप. एनी टू रूल्स विच यू लाइक. सो हियर आई एम यूजिंग one of the light rays that is coming parallel to the principal axis and the second light ray I am showing passing through the center of curvature. ठीक है, try to draw the ray diagram, pause the video and draw it by yourself and then check whether you have drawn it correct or not. Okay, so I have drawn one of the light ray that was coming parallel to the principal axis. So any ray of light that is coming parallel to the principal axis reflect होने के बाद कहाँ से pass होनी चाहिए? That should be passing through the focus. Okay, use a scale to draw the ray diagrams. I am just drawing it freehand, but don't draw it freehand. Use a scale to draw the ray diagrams. So it should be passing through the focus. Another ray of light that is passing through center of curvature will retrace its path. तो एक reflected ray ये है और एक reflected ray ये है. जहां भी दोनों reflected rays intersect करती हैं एक दूसरे से, that is the position of image. तो image कहाँ पे बनेगी? The image is formed here. It's below the principal axis, so it's real and inverted image. Real and inverted image बन रही है because it is below the principal axis. ठीक है, size of the image अगर आप compare करोगे आपके diagram को, if you have taken proper measurements, if you have drawn it using a scale, तो आपकी image अपने आप बनेगी. that will be smaller than the object. object से छोटी image बनेगी हमेशा. ठीक है, एक बात और ध्यान रखना है, जब भी आप रे डायग्राम्स बना रहे हैं
टेक द मेजरमेंट्स प्रॉपरली। जितना आपने डिस्टेंस लिया है पोल और फोकस के बीच में, उतना ही डिस्टेंस आपको लेना है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अगर आपने ये डिस्टेंस पोल और फोकस के बीच में 3 सेंटीमीटर लिया है, तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर शुड ऑल्सो बी 3 सेंटीमीटर ओनली। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस पोल और फोकस के बीच में है, सेम डिस्टेंस फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में मेजर करके लीजिए। योर डायग्राम विल नेवर बी रॉन्ग। ओके, एंड फॉलो एनी 2 rules whichever you like. Out of the 4 rules, you can choose any 2 rules to draw all the ray diagrams. Now, third condition, हम object को और पास लेकर आते हैं and we'll place the object at center of curvature. So, if this is focus, this is the center of curvature. अब हमको रखना है object center of curvature पे। पर जैसे ही हम object center of curvature पे रखेंगे, हम करने वाले हैं थोड़ी सी cheating. चीटिंग क्या करने वाले हैं हम कि जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है एंड साइज ऑफ द इमेज इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आर एग्जैक्टली द सेम। तो हम क्या करेंगे इसमें, चीटिंग क्या करने वाले हैं, मैम चीटिंग भी सिखाती है। तो चीटिंग क्या करने वाले हैं हम कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है, मान लो हमने 2 सेंटीमीटर बड़ा ऑब्जेक्ट बनाया है, तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही 2 सेंटीमीटर बड़ी इमेज भी बना लेंगे। ठीक है, अब हम फोकस पॉइंट अभी मेंशन नहीं करेंगे और हम क्या करेंगे, विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल इन दिस डायरेक्शन एंड विल ड्रॉ अ लाइन पैरेलल like here as well. Okay, क्यों बनाया ऐसे वो देखते हैं। ठीक है, तो one of the light ray that was coming parallel to the principal axis reflect होने के बाद कहाँ से पास होनी चाहिए, that should be passing through the focus. तो चलो इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं और जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर गई, इसको एक्सटेंड करते हैं, जिस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट कर गई उस पॉइंट को हमने कह दिया हाँ यही है हमारा फोकस। ओके, सो पैरेलल बीम ऑफ लाइट शुड बी पासिंग थ्रू फोकस ओनली। अगर हम प्रॉपर मेजरमेंट्स लेते हैं तो बिना चीटिंग करे भी हमारा डायग्राम ऐसे बन सकता है, बट चांसेस हैं कि 1 मिलीमीटर भी अगर हमारा इमेज राइट साइड या लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया तो हमारा आंसर हो जाएगा रॉन्ग एंड वी डोंट वांट दैट। ओके, वी विल बी गेनिंग फुल ऑन फुल मार्क्स इन लाइट चैप्टर। ओके, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी चीटिंग, और हमने पहले से ही इमेज बना के रखी है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम साइज की। दूसरी रे ऑफ लाइट को हम क्या करेंगे, फोकस से पास करवाएंगे, मिरर तक लाएंगे, और अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास होकर आती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाती है। ओके, सो वो रूल यूज करेंगे हम और हमारी इमेज किस पे बन गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल, यू आर गुड टू गो। फॉर एवरी कंडीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फॉर एवरी पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी विल मेंशन when the object is placed at center of curvature, image is also formed at center of curvature, nature of the image is real and inverted, सच में intersect कर रही है light rays, so it's a real image. Inverted क्यों, हमें दिख रहा है कि light rays intersect कहाँ कर रही हैं, principal axis के नीचे, so principal axis के नीचे मतलब the image is inverted image बन रही है and it's formed at center of curvature. ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लाते हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो आप कहेंगे मैम 3 के बाद 4 तो यहाँ आना चाहिए, पर मैम का 4 यहाँ क्यों आ रहा है, लेट्स सी कि हमारा 4 यहाँ क्यों आया। ओके, तो हम वही 3 सेंटीमीटर पे मैं फोकस लिख रही हूँ, उसके आगे 3 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, आई एम प्लेसिंग माई ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। वन ऑफ द रूल्स, parallel to the principal axis, after reflection it will be passing through focus, तो पास कर देते हैं इसको फोकस से। सेकेंड रूल, आपकी इच्छा है तो फोकस से पास करवा के पैरेलल करिए, और इफ यू वांट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाइए। ओके, एनी ऑफ द 2 रूल्स यू कैन बी यूजिंग एंड यू विल बी गेटिंग द प्रॉपर इमेज। सो आई एम यूजिंग दिस रूल। सेकेंड रे ऑफ लाइट मेरी फोकस से पास होकर आ रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में
पैरेलल चली जाएगी टू द सेंटर ऑफ, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट्स गोइंग, दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर, तो यही हो गई हमारी इमेज की पोजीशन। जहां पर भी दोनों लाइट रेज इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पे बनती है इमेज। तो इमेज कहाँ बनी है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसी बनी है? बड़ी बनी है। ओके, सो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, पोजीशन ऑफ इमेज इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। किस टाइप की इमेज है? रियल इन्वर्टेड है। साइज कैसा है? इट्स एनलार्ज, इमेज साइज इज एनलार्ज। सो हमने इधर 4 क्यों लिखा था, अब आपको समझ में आ जाएगा। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था, इमेज बन रहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, बट नाउ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, द इमेज इज फॉर्म्ड एट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये दोनों कंडीशन एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हो गई। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लेकर आते हैं, मतलब हमें अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा? एट फोकस। सो नाउ विल बी प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एट फोकस। सो लेट्स प्लेस आवर ऑब्जेक्ट एट फोकस। अब ये हमारा 5 इधर क्यों आया, ये भी आपको समझ में आएगा। सो वी आर प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट एट फोकस। फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है। वन ऑफ द लाइट रेज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस। अनदर रे ऑफ लाइट, हम कोई सा भी रूल यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज दैट अनदर रे ऑफ लाइट इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप ऐसा भी रूल यूज कर सकते हैं। और यू कैन यूज अ रूल दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection. The angle of incidence is equal to angle of reflection. Okay, but now you can see these light rays are parallel to each other. Parallel light rays कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, एंड सो ये इमेज भी नहीं फॉर्म होगी। तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, मतलब बहुत दूर तक ये लाइट रेज जाएंगी, बट वी कैन नॉट फाइंड आउट द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ दैट, एंड सो वी कॉल इट एज इंफिनिटी। ये कंडीशन फर्स्ट कंडीशन के जस्ट ऑपोजिट है। जब लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही थी तो कन्वर्ज हो रही थी फोकस पे, इमेज वॉज फॉर्म्ड एट फोकस। बट जब ऑब्जेक्ट रखा है फोकस पे तो इमेज जा रही है इंफिनिटी पे। दिस इज यूज्ड इन योर हेडलाइट ऑफ कार्स ऑल्सो। हम मिरर्स पढ़ते पढ़ते उनके साथ में यूजेस भी समझ लेंगे। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं हेडलाइट ऑफ कार में। ये हमारा हेडलाइट ऑफ कार है जिसके पीछे एक रिफ्लेक्टिंग मिरर, एक कॉन्केव मिरर प्लेस कर दिया जाता है, एंड उसके फोकस पे लगा देते हैं हम लाइट बल्ब। एंड नाउ व्हेन द लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, हेडलाइट का जो रिफ्लेक्शन है, दैट लाइट बीम goes to a great distance. So that is by this phenomena only. तो हेडलाइट ऑफ कार में, सर्च लाइट्स में, टॉर्चेस में पीछे की तरफ एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा दिया जाता है, एक कॉन्केव मिरर लाइक सरफेस लगा दिया जाता है, एंड द बल्ब इज प्लेस्ड एट द फोकस, ताकि लाइट रेज कहाँ तक जाएं? बहुत दूर तक। ओके, व्हाट्स द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? फोकस। पोजीशन ऑफ इमेज? एट इंफिनिटी। नेचर ऑफ द इमेज, क्योंकि ये इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रही है, सो वी से दैट इट्स रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नाउ लास्ट कंडीशन, हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेकर आते हैं। ओके, तो हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लेकर आते हैं, मींस वी आर प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस एंड पोल के बीच में रखेंगे, ये हमारा लास्ट पोजीशन है। So this is focus, this is pole, this is my concave mirror, and now I am placing the object between focus and pole. One of the light rays coming parallel to the principal axis after reflection will pass through focus. Another ray of light, कोई सा भी rule use करो जो आपको अच्छा लगता है। Out of 4 rules, जो आपकी इच्छा हो वो rule use करो। Okay, you cannot make that pass to the focus so that it will be parallel later on. वो नहीं यूज कर पाओगे क्योंकि उसके जस्ट पीछे ही है। So another ray of light I am passing to center of curvature. Center of curvature से पास कर रही हूँ मैं।
अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके तो ये लाइट रेज से एक दूसरे से दूर जा रही है, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ये तो कभी भी मीट नहीं होंगी, कहीं पे भी मीट नहीं होंगी। बट वेट अ मिनट, ये पैरेलल तो नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं तो मीट हो सकती है। लेट्स सी ये दोनों एक से कहाँ मीट हो सकती हैं। दे विल बी एबल टू मीट ईच अदर बिहाइंड द मिरर। चलो इनको ड्रॉ करते हैं मिरर के पीछे की साइड। एंड व्हाट वी सी a enlarged image form behind the mirror. तो कॉन्केव मिरर में जब भी आप अपना फेस देख पाते हो, when you are able to see an enlarged view of your face, then it's actually when very close to the mirror we are placing our object. तभी हम ऑब्जेक्ट को मिरर के अंदर देख पाएंगे, अदरवाइज द मिरर ऑब्जेक्ट विल नॉट बी विजिबल टू अस इरेक्ट इन द मिरर। इरेक्ट इमेज ऑब्जेक्ट की हमको मिरर के अंदर नहीं दिखेगी। कब तक? जब तक हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में नहीं प्लेस कर रहे, मीन्स वी आर नॉट प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज टू द मिरर। अगर हम बहुत पास में रखेंगे तो ही हमें इमेज फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तभी हमें इमेज मिरर के अंदर दिखाई देगी। और जो भी इमेज हमें मिरर के अंदर दिखाई देती है, मतलब मिरर के पीछे दिखाई देती है, दैट इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। जब भी आप मॉर्निंग में कोम यूज करते हो एंड यू सी योरसेल्फ इन द मिरर, दैट इज आल्सो एक्चुअली अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है एंड कॉन्केव मिरर सिर्फ इस पोजीशन में वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज फॉर्म करता है। वेयर डू वी यूज सच अ इमेज? कहाँ पर एप्लीकेबल है, कहाँ पर यूज है? तो इस मिरर को यूज किया जाता है एज अ शेविंग मिरर। दिस मिरर कुड ऑल्सो बी यूज बाय द डेंटिस्ट। डेंटिस्ट भी इस मिरर को यूज करते हैं। व्हेन यू गो टू विजिट अ डेंटिस्ट एंड दे विजुअलाइज अ टीथ, then you must have seen in the ad of Colgate as well that they put a mirror in your mouth and आपको उसको एक बड़ा सा इमेज दिख जाता है, आपके टीथ में कोई भी कैविटीज हैं, some blackening is there in the teeth, so everything could be visualized very easily। बड़ी इमेज बन जाती है एंड लार्ज इमेज बन जाएगी आपके टीथ की, और द डॉक्टर विल बी एबल टू सी दैट एवरीथिंग क्लियरली। तो दिस इज ऑल्सो यूज्ड बाय द डेंटिस्ट, और इसलिए कॉन्केव मिरर को शेविंग मिरर भी कहते हैं एंड डेंटिस्ट मिरर भी कहते हैं। ओके, so I hope you are clear with all the position of the objects and images. You are clear with all the ray diagrams for concave mirrors. This for this condition what we'll write? Position of object is at between focus and pole. Position of image is behind the mirror. Nature of the image is virtual and erect, and size of the image is enlarged. So for every position of object, you should write all these 4 points. Okay. So I hope the mirrors are clear to you all. I'll shift to side. So if you want, you can take a screenshot, but better diagrams are given in your NCERT book as only. So you need not take a screenshot for that. So that's all for the ray diagrams. Now let's do some experiments to show these positions of objects and images. When the object is at infinity, that is shown by parallel beam of light, then the image is formed at focus. When the object is beyond center of curvature, the image is formed between center of curvature and focus, and it's a diminished, real, inverted image. You can see that the image is smaller than the object. And the image is real and inverted. So you can see the inverted image of the candle. Next, we'll be placing the object at center of curvature. So I'll be placing my screen just above the candle, because when the object is at center of curvature, image is also formed at the center of curvature, and you can see it's a real, inverted, and the image size is same as that of the object. Now I'll be bringing my object closer. So now when the object is between center of curvature and focus, the image is formed beyond center of curvature, and it is real, inverted, and enlarged image. You can see the enlarged image on the screen, I hope.
So it's an enlarged image of the candle that's beyond center of curvature. It's formed on the screen. A real image is always obtained on the screen. Now, I have placed my object approximately at focus, and so you can see that the parallel beam of light rays are going till infinity, but I can't show them to be going till infinity, so it's a diffused image. The light is just spread around, and that's going till infinity. Now, the last position when the object is between pole and focus, then a virtual, erect, and enlarged image is formed. So you can see the candle image is enlarged and it is virtual and erect. Virtual image is seen in the mirror. So you can see that enlarged image is formed, and that's why it is used as a dentist mirror also. Now let's discuss the rules for drawing the ray diagrams for convex mirrors. Earlier also I told you that the rules for concave and convex mirrors are approximately the same only, but once again let's specifically discuss it for convex mirror. So convex mirror is a mirror in which the reflecting surfaces bulge outwards. This midpoint of the mirror is known as pole. Focus is the point that is present behind the mirror. Pole and focus both are present behind the mirror only. Now, if a ray of light is coming parallel to the principal axis, I have shown you in the activity also that convex mirror is a diverging mirror. So, when the light rays are parallel falling on a convex mirror, they will diverge off. So, if a parallel ray of light is approaching towards a convex mirror, after striking the mirror, it will diverge off and appears to be coming from the focus. It will appear कि ये कहाँ से आ रही है light ray? Focus से आ रही है. But it's actually diverged from the mirror. Once a light ray strikes the mirror, वो diverge off हो जाएगी and appear होगा कि वो focus से आ रही है. Okay, so that's point number 1. Point number 2, it's similar to that of concave mirror. If a ray of light was approaching towards focus, अगर ये सीधी आ जाती लाइट रे तो कहाँ तक पहुंच जाती? फोकस पे पहुंच जाती. बट आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर, मिरर से टकराते से ही क्या होगा? It will become parallel to the principal axis. So if a light ray is coming towards the focus, अगर straight आती तो focus तक आ जाती, but mirror से टकराते ही से क्या होगा? That will go parallel to the principal axis. So that is rule number 2. Rule number 3 is, this is focus, this is center of curvature. Center of curvature is the center of the sphere from which we have taken out this mirror. तो अगर एक light of ray that is coming towards center of curvature, अगर ये सीधी आती तो कहाँ तक पहुंच जाती? It would have reached the center of curvature. But क्योंकि ये मिरर से टकरा गई, so it will go back and it will retrace its path. Okay, same as we have seen in concave mirrors also. And now the last rule that is same for every mirror, concave, convex or plane mirror, that angle of incidence is the angle between the incident ray and the normal, and the angle of reflection, which is the angle between the reflected ray and the normal, they are both equal. So that is true for every mirror. That is one of the laws of reflection, that angle of incidence is equals to angle of reflection. Okay, so these are the rules for drawing the ray diagrams for convex mirror. Now let's draw the ray diagrams for convex mirrors. Now we'll be drawing the ray diagrams for convex mirrors. The first condition is when the object is at infinity. Whenever the object is at infinity, we just draw two parallel lines that shows the object position. So I'll be drawing two parallel lines. Now when parallel beam of light is coming on the convex mirror, it will diverge off and appear to be coming from the, it will diverge out and appears to be coming from the
focus. So a very small sized, point sized image of the object will be formed at the focus. Okay, the image is formed behind the mirror, और जब भी image mirror के अंदर बनती है, हमें object mirror के अंदर दिखाई देता है, that is always a virtual image. जब भी light rays actually intersect नहीं करती, हम उन्हें trace back करके intersect करवाते हैं, then the image is always a virtual image, and virtual image हमेशा erect होती है. So whenever you stand in front of a mirror and we are able to see ourselves in the mirror, that is a virtual image. Now the second condition, when the object is placed at anywhere other than infinity. हम कहीं और क्यों नहीं रख सकते ऑब्जेक्ट को? कॉन्वेक्स मिरर्स में सिर्फ दो ही कंडीशन क्यों नहीं होती? बिकॉज फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब मिरर के पीछे हैं, तो हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पीछे रखने से तो इमेज बनेगी नहीं. सो वी कैन प्लेस द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर. तो इसलिए ऑब्जेक्ट को जब हम मिरर के सामने रखेंगे तो सिर्फ दो ही पोजिशंस हैं. वन इज at infinity and second is at any place other than infinity. Now, what could be the image? One of the rays that is coming parallel to the principal axis, after reflection diverges off, appears to be coming from focus. सेकेंड रे ऑफ लाइट आप फोकस की तरफ ला सकते हो और फिर पैरेलल रिफ्लेक्ट करवा सकते हो. सेकेंड रे ऑफ लाइट आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ भी ला सकते हो. इट्स टोटली योर चॉइस. आप चारों रूल्स में से कोई भी दो रूल्स यूज कर सकते हो, आपकी इमेज वैसे के वैसे ही बनेगी. सो आई एम यूजिंग द रूल एंड विच आई एम जस्ट ट्रेसिंग द लाइट रे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है. अगर सीधी जाती तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुंच जाती, बट क्योंकि ये मिरर से टकराई and after striking the mirror it will get reflected back in the same direction. उल्टे पैर लौट जाएगी, अपना पाथ को वापस से ट्रेस करेगी. तो जहां पर भी रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं वही पोजीशन होती है इमेज की. तो लाइट रेज दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पे, और यही बन रही है हमारी इमेज. तो इमेज कहाँ पर बन रही है? पोल और फोकस के बीच में. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? एनी पोजीशन अदर देन इंफिनिटी. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज? द इमेज इज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस. नेचर क्या है इमेज का? वर्चुअल एंड इरेक्ट. इरेक्ट मतलब सीधी. एंड द साइज ऑफ द इमेजेस यू कैन सी इट्स स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. और हमारे साइड मिरर ऑफ किसी भी व्हीकल का जो साइड मिरर होता है वो कॉन्वेक्स मिरर ही होता है. सो इफ यू आर ड्राइविंग योर मोटरसाइकिल और स्कूटी, एनी व्हीकल, then you'll see that whatever the traffic is coming from behind, you are able to see that in the mirror. आपको मिरर में क्यों दिखाई दे जाता है? बड़ा सा ट्रक भी आपको अपने मिरर में दिखाई दे जाता है, क्योंकि इमेज कैसी बन रही है? छोटी इमेज बन रही है. अगर छोटी इमेज नहीं बनती तो पूरा ट्रक नहीं दिखता, ट्रक की सिर्फ हेडलाइट दिखती. ओके, सो इट्स रियली रिक्वायर्ड कि एक छोटी इमेज बन जाए so that you are able to see a complete image of the object. And that is why convex mirror is also known as a rear view mirror. Rear view mirror का मतलब होता है whatever is coming from behind that could be seen. Okay, so that is rear view mirror. Parking areas में भी ये convex mirror लगा दिया जाता है. You can see a big convex mirror placed in the parking areas, as big as like big one. Sharp turns पे भी convex mirror place करा जाता है. So why is it placed at sharp turns and at parking area? For example, if this is the road, one car is coming from this direction, another car is coming from this direction. Convex mirror में हमेशा इमेज सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी. तो इस वाली कार की और इस वाली कार की दोनों की इमेजेस मिरर में बन जाएगी, and both the drivers will be able to see each other. So they will come to know that at the turn there is another car. Okay, so they can see the pathway, that whether it is clear or not. So a convex mirror is also placed at parking areas and at sharp turns. Okay, जहाँ पे भी sharp turns होते हैं, ऐसे curve turns होते हैं, especially hilly areas में, वहाँ पर
टर्न्स पे बड़े बड़े कॉन्वेक्स लेंस प्लेस कर दिए जाते हैं. ओके, सो कॉन्वेक्स लेंस प्रोवाइड्स अ वाइडर field of view. That is the main reason why it is used as a rear view mirror. A question is asked in your exams that why convex mirror is used as a rear view mirror. So it's used as a rear view mirror because it gives a smaller image, erect image, and it gives a wide field of view. So अगर आपने आपके side mirror of the car में या side mirror of any vehicle that you are driving उसमें कॉन्वेक्स मिरर की जगह प्लेन मिरर प्लेस किया होता तो सिर्फ जस्ट आपके पीछे जो है वो विजिबल होता. बट क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का शेप कुछ इस तरह से रहता है दैट इट इज बल्ज आउटवर्ड्स, तो वॉट एवर इज कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन और वॉट एवर इज कमिंग फ्रॉम अनदर डायरेक्शन, everything will be visible. So that provides a wider field of view, and that is why it is known, it is used for rear view mirror in the vehicles. Okay, I hope the ray diagrams and the concepts related to the mirrors are clear for you all. I hope you were able to see in the experiments what is a real image and for different position of object where the image is formed. If that's all for this video, please subscribe to my channel if you haven't already. If you like the content, please share it with your friends. Help me to spread knowledge. That's all for today. Good day, everyone.